हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे लाइव स्ट्रीम में अगेन। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं गेंशिन इम्पैक्ट का इलेक्ट्रो आर्कन। ओके, पहले कमिशंस करेंगे एंड उसके बाद बढ़ेंगे आर्कन की ओर। ऑलराइट, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह करने में कंजूसी मत करना प्लीज़। और जो देख रहे हो और पुराने हो वो लोग भी प्लीज़ कर देना, ठीक है? क्या कर देना? लाइक कर देना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अगेन हम यहाँ जा रहे हैं आज। ओके, वेल ये यहाँ पे है आई सपोज। ये रहा, कंप्लीट द टाइम चैलेंज। लॉल, Scanning. हो गया टाइम चैलेंज कंप्लीट, इजी। Rain outlines your fate. Okay, so next is here somewhere in the universe. Someone have to cut a verse. The world's smallest violin Time to act. Body and really mind. needs an audience. Time to act. No, my sword. I'll settle this. Witness the power of good. Come at me. Breaking new ground. अब तो ये गया। भाई जब से काव्य आया जिंदगी में तब से भाई कमिशंस करना बहुत इजी हो गया है। और ये भी एक बार में मिलता है भाई तोड़ने से। नेक्स्ट इज हियर, लेट्स गो। Huh? When did it start to rain? Oh no, I forgot to bring an umbrella. छुआ बारिश हो रहा है, फायदा उठाओ, कमेंट जल्दी से। शिट, क्या किया मैंने ये? Scanning. Our bond is strong. Get with me. आओ। Sight clear. At the frying pan, it's... No, my sword. Feast your eyes. हो गया। Nice and spicy. Scanning. भाई ये जल्दी काम हो जाता है भाई, लिटरली। एक चीज करना चाहूँगा, पार्टी सेटअप पे मुझे थोड़ा चेंज करना है। पार्टी सेटअप पे मेरे को क्विक सेटअप पे जाके इसको ऐसे करना है। नाइस, ओके। भाई काव्य से बहुत अच्छा हो गया मेरा काम, बहुत ज़्यादा अच्छा। लिटरली कांट इमेजिन कि
कावे इतना इजी कर देगा मेरा काम। I get dizzy and sleepy when I'm under the sun for too long. It's a similar feeling to pulling an all-nighter on a work project. Out of my way! Ring cutter! आओ Bubba, get them! No, my sword! Our bond is strong! Breaking new ground! Watch and learn! Sight clear! हो गया, देखा कितना इजी। और इतने सारे रिवॉर्ड्स वगैरह सब कुछ कावे की वजह से। All right. Nice. There's no end to this. Stand with me! Rain outlines your fate. Come at me! Our bond is strong. Nice and spicy. Scanning! एक्चुअली पूरी टीम ही अच्छी है मेरी, तभी इतना ईजिली मैं काउंटर कर पा रहा हूँ सारी चीज़ों को। नाइस, सो अब चलते हैं। Come at me! Bubba, get them! No, my sword! Body and mind. Scanning! ओके, अब चलते हैं हम मेन मिशन की ओर, जो कि हमारा आर्कन क्वेस्ट इस जगह पे है, जो कि इससे पहले लेवल अप करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ओके, वहाँ जाने से पहले आई थिंक मुझे एक बार इधर से कलेक्ट कर लेना चाहिए सारी चीज़ें, उसके बाद हम वहाँ चलेंगे, ठीक है। Add Astra. Dispatch. Okay, go. कोई भी जाओ भाई, बस जाओ। Nice. Add Astra. Thank you for completing to. All right, so अब चलते हैं हम लोग।
मेन मिशन पे, जो कि कहीं इस तरफ है, ल्यूए में। ल्यूए नहीं यार, इनाजुमा में। ल्यूए ल्यूए यार, ल्यूए। सॉरी सॉरी। अभी भी कुछ दिया नहीं इन्होंने डेवलप करने के लिए, और इसे एसेंड करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। मेरे पास ऐसे आसानी से एसेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Sorry, we don't serve the general public. I'm afraid you'll have to leave. Wait! We're not the general pub. Well then, you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation, judging by your attire. Are our clothes really so... what paimon means to say is... The Yashiro Commission's seal. This must be from Mr. Toma. It seems there's more to you than meets the eye. In which case, welcome to the भाई Komori कौन से प्लेयर से पहले a safe अपग्रेड करूं? haven for the Yashiro Commission. भाई जो तुमको सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, देखो मैंने क्या किया था। अच्छा मुझे ऐड करना है तो मुझे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर। और जहाँ तक बात रही कि अपग्रेड करने की, तो एक काम कर सकते हो तुम, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तुम ट्रैवलर पे फोकस कर लो, ट्रैवलर पे फोकस करो, और क्रायो पे 4 स्टार पे सबसे बेस्ट है अभी तक काया। काया को मत छोड़ना, ठीक है? क्रायो पे काया का रखो। मैं बताता हूँ तुमको, एक एक करके रुको। वेट just एक सेकंड। Relax. No need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? Huh. So you didn't see anything like this when you were in Liyue Harbor? Now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. All right. I've had my fun. Hey, you're this close to get... Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for you for so long. और मैं तो ये As was कहूँगा the case in कि अगर Retail. तुम्हारे पास अभी पुल करने का मौका हो तो पुल करके So काव्य I came निकाल up दो। with this little fun डेंड्रो में greeting काव्य for बहुत when you ताकतवर है, और But in all इस ट्रैवलर पे भी seriousness, I काव्य would like to का जो मतलब कि apologize डेंड्रो about that एट्रीब्यूट है little वो test you went बहुत through अच्छा है earlier. मतलब। Though it was quite necessary. It helped us determine whether or not to bring you before Ms. Kamisato. And Don't think that Paimon's gonna forgive you just because you're getting all serious now. sorry, did I overdo it? My apologies. Let me just say this. You've often found yourself skirting the rules from the very beginning, haven't you? Naturally, this is due to your unwavering and resolute determination. A long time ago, we had a friend who was much the same. But when the lightning struck... so you've heard of his story. His light still burns all the more brightly. Yes, of course. I will bring you to the Kamisato residence where the Yashiro भाई Commission लाइक is मार देना, ठीक है? located. डिंग डिंग भाई, But डिंग डोंग before भाई, that, सॉरी। there is one other place I was hoping you both would डिंग accompany डिंग, me सॉरी to. सॉरी, सही है सही है। Where? I would like you to come with me एक to लाइक the बस मार दो। statue of the omnipresent god. मैं जैसे ये It's still खत्म under होती है मैं तुमको construction बताता हूँ now, क्या होगा। but you can already see it from practically anywhere on Narukami Island. ओके सो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। देखो मेरे पे देखो क्या क्या कैरेक्टर्स है फालतू फालतू। ये देखो मेरे पास 5 स्टार है, इलेक्ट्रिक में मेरे पास 5 स्टार भी है, बट मुझे 4 स्टार ज़्यादा सही लगती है। तो स्टार मैटर नहीं करता है एक्चुअली। मेरे पे पार्टी में देखो सब मेन जो है 4 स्टार वाले हैं। ट्रैवलर 60 लेवल का है, 5 स्टार है, और इसका एट्रीब्यूट देख लेकिन डेंड्रो है यहाँ पे, देख सकते हो तुम। तो ये फ़र्क है बस। मेरी पार्टी में मतलब कि ब्लूम, हाइपर ब्लूम वाली पार्टी है। कावे, अब कावे का पुल आया है तो मैंने अभी किया था तो मुझे ये मिल गया। वीडियो चाहो तो देख सकते हो, यूट्यूब में अवेलेबल है वीडियो वाले सेक्शन में, तो देखना मज़ा आएगा। तो ये कावे हो गया हमारा, ये किशिंग, ये दोनों बर्निंग इफेक्ट डालते हैं, और इसके साथ मैं करता हूँ तो ब्लूम होता है, इसके साथ करता हूँ तो हाइपर ब्लूम होता है। तो ये मेरा मेन है मतलब अभी तक, जब से ये मिला है मतलब मुझे तब से। और क्रायो पे मेरा ये मेन है, अर्थ में मेरे पास ये मेन है, और ये एम्बर को जो है
नेट स्लो है ब्रो, तुम्हारा नेट स्लो है क्योंकि मेरे फ़ोन में तो चल रहा है। एक बार रीस्टार्ट करना ज़रा अपना लाइव स्ट्रीम, फिर देखना। और एम्बर को अपने पास रखना, ठीक है? एम्बर इम्पॉर्टेंट है, एम्बर को भी लेवल अप करते रहना पैरेलली। एम्बर लगेगी, एम्बर लगेगी, ट्रैवलर भी लगेगा एक्चुअली, सच कहूँ तो, और काया लगेगा। इसकी ज़रूर अगर ये एक्चुअली हेल्प करती है बॉसेस से लड़ने में, बॉस से अगर लड़ना हो तो ये बहुत हेल्प करती है क्योंकि इसके पास शील्ड होता है ना, इसलिए। और फ्लेम में अगर तुमको ये चाहिए, ये और ये दोनों अगर तुम्हें चाहिए तो ये दोनों तुमको मिलेंगे। ये दोनों तुमको कब मिलेंगे? जब तुम एबेस स्पिरल करोगे। एबेस स्पिरल जो है वो भी तुम्हें बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। वर्ल्ड जैसे ट्रैवल करोगे ना, तुम्हें एबिस स्पिरल मिलेगा। एबिस स्पिरल में जैसे ही तुम्हारा लेवल अप होगा, इसका इसका एक्चुअली इसका और इसका, और अगर तुम्हारे पास कोई नया कैरेक्टर है तो उसका लेवल अप होगा तो उसको लेके जाना एबिस स्पिरल में फाइट करना, फोर्थ फ्लोर के फर्स्ट स्टेज में। तो तुम्हें ये मिल जाएगी एक, और एक ये मिल जाएगी। तो फ्लेम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए अपने को। और हाइड्रो पे ये बहुत अच्छी है, पावरफुल। ये हीलर है और पावरफुल भी है। सो मेरे तो अभी मेन यही है, ये चारों। ये देखो। और क्या बताऊँ मैं तुम्हें, एबिस स्पेरल की लोकेशन दिखाता हूँ मैं, रुको। देखो तुम इस जगह पे जाओगे ना, इस जगह पे कहीं पे तुमको मिलेगा। तो यहाँ से तुम फाइट से, और एनिमी से फाइट करने के बाद यहाँ पे होंगे सीरीज। तो सीरीज को तुम 3 सीरीज होंगे एक्चुअली, तीनों को उनके जगह पे पहुँचा देना। तो यहाँ से एक विंड करंट एक्टिवेट होगा। उस विंड करंट से तुम ऊपर जाओगे, और ऊपर जाके तुम्हारा एक पर्पल सा कुछ दिखेगा, उस होल में घुस जाना, और उस होल में घुस के इस जगह पे एक्टिव कर लेना। तो ये है एबिस स्पेरल। यहाँ पे जाके तुम फाइट करोगे और फिर तुम्हें मिल जाएंगे रिवॉर्ड्स वगैरह। यहाँ से प्राइमो जेम्स मिलते हैं बहुत सारे, लेकिन तुम्हारा लेवल अच्छा खासा होना चाहिए यहाँ पे जाने के लिए। कम से कम 30-40 लेवल के तो कैरेक्टर्स होने चाहिए तुम्हारे, तो कर लेना वो, उसके बाद ही जाना। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट मिशन की ओर। और गेम में पावरफुल बनाना है ना किसी भी कैरेक्टर को, तो उसके लिए आर्टिफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिफैक्ट्स रख लेना, आर्टिफैक्ट्स होंगे तो बहुत इजी काम हो जाएगा तुम्हारा फाइट करने में दुश्मनों से। आर्टिफैक्ट से याद आया, इसके पास एक अच्छा सा आर्टिफैक्ट था मेरे पास, दे सकता हूँ मैं इसको। डीप वुड्स मेमोरी, डीप वुड ही है ना? एक्चुअली मुझे इसको यही देना था, डीप वुड। मजाक नहीं कर रहा, देना था मेरे को पहले से ही। वेट वेट वेट, कभी मिलेगा तो लेंगे इन आर्टिफैक्ट्स को। ये डीप वुड वाले चाहिए मेरे को काव्य के लिए एक्चुअली। चलो अभी इसको एनहांस करते हैं पहले तो। डीप वुड काव्य के लिए बहुत बेस्ट है।
नाइस। और भी कितने सारे फ्लावर्स हैं मेरे पे, लॉल। डीप वुड लेकिन मिलता नहीं जल्दी से यार। पेशेंस में मुझे नहीं पता कहाँ पे है डीप वुड। डोमेन्स में ही मिलेगा, आई थिंक सो। जो यहाँ पे इतने इतने डोमेन्स हैं। कभी करेंगे फार्मिंग करेंगे तब देखेंगे। अभी आज मेन स्टोरी पे कर रहे हैं फोकस, तो आज मेन स्टोरी पे करते हैं। क्यों 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 जरूरी था ये होना? क्या था यहाँ पे? मैं गिरा कैसे? This area sure feels gloomy. People probably don't come here often, do they? थैंक यू ब्रदर लाइक करने के लिए। Are Paimon's eyes playing tricks? Or are there things embedded in the statue? Visions. बस खेलते रहना गेंशिन, मजा आएगा। साथ में खेलना हो मुझे ऐड कर लेना। You mean all the UID भी है, visions देखो ये that are देखो। collected from the vision hunt decree are put into the statue? कोई दिक्कत नहीं है, खेल लेंगे साथ में। So you've already heard of the Vision Hunt Decree. Before I try to explain, I should perhaps remind you first that Mondstadt is the city of freedom, and Liyue is the city of contracts. As for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler and its deity. ओके मैं फिर से बताता हूँ। The वेट eternity in question is her endless and unchanging will to rule over Inazuma. ओके अगर तुम्हें बहुत Such, डिफेंसिव खेलना she पसंद है, relies on the Tri-Commission बहुत to ज़्यादा डिफेंसिव regulate the खेलना, nation's तब बारबारा यूज affairs कर and the सकते हो। Sakoku Decree एक to हीलर है limit तो the people's काम movement. आएगी। The Shogun wishes to keep एक्चुअली जब ड्रैगन Inazuma स्पाइन in का मिशन करोगे ना, stasis, वो आइस वाले allowing the मिशन, वो stream जो of आइस वाली जगह time का to मिशन flow करोगे, from one end तब तुम्हें to the बारबारा other की जरूरत पड़ without सकती है। disturbing it for तब all रख लेना तब time. के लिए बस। Seems like every god has their मेरे own पास बस will. बारबारा है, मैं मतलब यूज ही Of नहीं करता। course, this is my own limited understanding. As for the reason behind the recent Vision Hunt Decree, perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity doesn't allow for और such विश पुल करना instability है, to ठीक है? अभी exist. अभी तो कावे का विषय है, Whatever 10 the जमा करो case, और विश the पुल कर fact लो। is that the Raiden कुछ अच्छा मिल Shogun has सकता है अभी, dispatched the कुछ Tenryou अच्छे कैरेक्टर मिल Commission to सकते हैं अभी। scour the nation for visions, embedding each one in एक्चुअली मुझे this कावे चाहिए statue. था, कावे मेरा And फेवरेट this statue of the कैरेक्टर है, omnipresent god तो can मुझे be मिल गया seen as लकली, Inazuma's symbol पता नहीं of कैसे। eternity. But if that's the case, wouldn't you say that the Raiden Shogun is being, oh, I don't know, selfish? Only outlanders such as yourselves would ever dare speak out so directly against the Raiden Shogun. And yet, I agree. The Vision Hunt Decree is something that simply should not exist. And Miss Kamisato has been committed to fighting it since the कौन सा day वाला it मिशन was समझ नहीं पाया? announced. स्ट्रीम रुक गई थी। अच्छा अच्छा हाँ रुको रुको मैं बताता हूँ। Hey, are उस you नए कैरेक्टर को ना, You हाँ look एक like your मिनट। mind is elsewhere. हाँ मतलब कि तुम्हारे पास जितने What कैरेक्टर sound? 10-50 I didn't कैरेक्टर hear क्यों ना हो, anything. तुम्हारे Did मेन something कैरेक्टर happen? होने चाहिए, मतलब मेन टीम होनी चाहिए। Yeah, you touched the statue, and then what? Aspirations? एक्चुअली कल परसों तक मेरी टीम पता है कैसी थी? That would मैं seem to मैं अपने confirm कल the परसों की टीम same. बताता हूँ। Wait, Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain खत्म होने strength, दो ये स्टोरी, फिर the मैं gods look स्टार्टिंग से upon them बताता हूँ, with तुम्हें favor. लोकेशन में बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। That is where visions come from. In other words, a person's vision हाँ represents हाँ their हाँ हाँ बता ambition. रहा हूँ। वेट So if what you just स्टार्टिंग said से is बता स्टार्टिंग true, से। then the ambitions of these people are stronger than I imagined. ये खत्म हो जाए स्टोरी। All right, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Okay. Kamisato residence. ठीक है, तो कामिसातो रेसिडेंस में जाने से पहले बताता हूँ मैं तुमको। देखो सबसे पहले 2 दिन पहले जब मुझे ये नहीं मिला था ये बंदा, तब मेरे पास पार्टी में कैसे थी? मेरे पास ये था, ठीक है, इस जगह पे यही थी, इस जगह पे ये था, ऐसी टीम थी मेरी कुछ। यहाँ पे काया था एक्चुअली,
इसकी जगह। सो कुछ ऐसी टीम थी, मतलब कि यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। हाँ, बट अभी मेरे पास, जब मुझे कल परसों मुझे ये मिला, तब से मेरे पास ये और ये है। अभी मेरे पास मेन टीम ये है, मतलब ये वाली, ये हाइपर ब्लूम टीम है एक्चुअली। और बारबरा जैसे हील करती है ना, वैसे ये भी हील करती है, तो ये हीलर है एक तरह की। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, जब ये हील करती है तो इसका हेल्थ जाता है थोड़ा सा, बट ये बहुत काम किया इसलिए मैंने इसे रखा हुआ है। दिखाता हूँ, रुको वेट। ये देखो अब इसका हेल्थ है ना, अगर इसका हेल्थ देखो कितना कितना ज़्यादा चला गया, बट ये हील हो जाती है फिर से। ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी डैमेज भी देता है और हील भी करता है, तो बहुत काम का है ये। और ये बाकी कैरेक्टर्स को भी हील कर देता है ऐसे करने से। सो फास्ट हील करता है बहुत ज़्यादा, तो अच्छा है ये। और मैप की बात करूँगा अगर मैं, तो मैप देखो, वो टेलीपोर्टर वाला जगह, तुम यहाँ पे जाना। इस जगह पे विलन्स वगैरह मिलेंगे, एनिमीज वगैरह, स्लाइम वगैरह, उनसे लड़ लोगे इजीली, लड़ लेना उनसे। और लेवल बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए तुम्हारी, लेवल होना चाहिए कम से कम 30, 40, 35 लेवल ऐसा होना चाहिए कैरेक्टर्स के लेवल, तुम्हारे एयर नहीं, कैरेक्टर्स के लेवल। एंड उसके बाद तुम यहाँ जब जाओगे तो यहाँ पे सीरीज मिलेंगे तुम्हें, 3 सीरीज होंगे, तीनों को उनकी जगह पे बैठा देना। तो एक विंड करेंट ओपन होगा, वो विंड करेंट से ऊपर देखना एक पर्पल कलर का पोर्टल होगा, उस पोर्टल से जा करके सीधे यहाँ तुम यहाँ पहुँचोगे। इस जगह पे फाइट करना तुम। और तुम्हें 4th फ्लोर के चेंबर 1 में, 4th फ्लोर के चेंबर 3 में हूँ मैं अभी, तुम्हें चेंबर 1 पे मिल जाएगा। ये चेंबर 1 तक खेलना, मतलब तुम चेंबर 1 तक खेलोगे तो तुम्हें सब मिल जाएंगे। तुम्हें ये मिल जाएगी 4th वाले में, और 3rd फ्लोर में खेलोगे तो 3rd फ्लोर के लास्ट चेंबर पे ये मिलेगी तुम्हें, ये। हाँ, मैं तुम्हें अपने मेन कैरेक्टर बताता हूँ। मेरे मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। डेंड्रो में मेरा ये है, ये एक्चुअली मेरा फेवरेट है, तो मेरा है ये। फायर पे मेरा ये है, वाटर में ये, इलेक्ट्रो में ये है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत लेवल अप करना। देखो 60 का है मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना। और इसको रेजोनेट कराना डेंड्रो से, डेंड्रो में बहुत पावरफुल रहता है ये बंदा। और आइस पे मेरा ये है, अर्थ पे मेरा ये है। ये बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये जो है ना, ये तुम्हें शील्ड देगी तो तुम बड़े बड़े पावरफुल एनिमीज से लड़ पाओगे। हाँ, कावे बहुत पावरफुल है, कावे रख लेना। और एम्बर है ना, एम्बर को कम मत समझना, ये बहुत काम आएगी, इसको भी लेवल अप कर लेना, एटलीस्ट 40-50 कर ही लेना, ठीक है। ये काम आएगी बहुत ज़्यादा। बस यही है, यही बताना था मेरे को। डेंड्रो और एयर का कॉम्बिनेशन, नहीं, डेंड्रो पहले वाटर, फिर मतलब पहले वाटर, फिर डेंड्रो, फिर इलेक्ट्रो, ऐसा। नहीं, का वाटर होगा तो अच्छा होगा। वाटर से होता है हाइपर ब्लूम, का अगर तुम्हें बर्निंग करना है तो एम्बर के साथ कावे अच्छा जाएगा। क्रिकेन करना है तो कावे के साथ लीसा या कोई इलेक्ट्रो वाली एजेंट। देखो, टीम में एक डैमेज डीलर होना चाहिए, एक अटैकर होना चाहिए, और बाकी 2 सपोर्टर होने चाहिए। बट मेरे में थोड़ा उल्टा चलता है। मेरे में एक हीलर है, ये सपोर्टर है, ये अटैकर है, ये डैमेज डीलर है ये वाला, और ये जो है ये हील करती है। हाँ, ये भी अटैकर ही है इस तरह की। ऐसे नहीं जा सकता मैं, चल के ही जाना पड़ेगा मेरे को। हाँ, वाटर वाला है, वाटर में बारबरा है तुम्हारे पास, बारबरा यूज कर सकते हो अभी तुम। वाटर में बारबरा है, अच्छी है, हीलर भी है, अच्छी है बारबरा, अच्छी है, खराब नहीं है, कर सकते हो यूज। ओह ये नाइस। कर लो, बट अगर ये करो
इस पे अगर कुछ वाटर मिल जाए तो अच्छा है। वाटर चाहिए इसमें, मिल जाएगी तो भाई लक है, लक। ये वाला किया था, मुझे इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था भाई, लक अच्छा था मेरा। अभी अगर ये करूँगा तो मुझे ये भी मिल सकती है, लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं, फालतू है, लगे मेरे को पसंद नहीं है मुझे। सो Huh? कुछ नहीं When did करना it है, start to rain? लेट्स गो। Oh no, I forgot to bring an umbrella. अम्ब्रेला क्यों चाहिए, ये क्या है? पता नहीं क्या है ये, बाद में करेंगे, अभी चलते हैं जल्दी जल्दी। और क्या फेसिकल कैरेक्टर कौन है, कौन है ये फेसिकल कैरेक्टर? भाई यहाँ पे भाई इलेक्ट्रो चीज़ें कलेक्ट करना बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है यहाँ पे तो। इलेक्ट्रिक है, ये है क्या? अच्छा ये, हाँ ये यूज कर सकते हो, लिसा से अच्छी है। अभी अभी नहीं, अभी Where's नहीं। रिस कौन है, तुम ही हो क्या रिस? अच्छी कैरेक्टर यूज कर सकते हो। ओके नो प्रॉब्लम। कावे बहुत पावरफुल है एक्चुअली, लेकिन कावे का एक ड्रॉबैक है, अगर तुम इसका अल्ट यूज कर दोगे जो मेन पावर है क्यू वाला, Huh? तो When क्या did it होगा start to कि तुम rain? दूसरे कैरेक्टर को स्विच करोगे और Oh फिर no, दोबारा I कावे पे forgot to आओगे bring an ना, umbrella. तो हट जाएगा उसका पावर। तो पहले सारे एबिलिटीज यूज कर लो, एंड उसके बाद आखिरी में यूज करो कावे की ये क्यू वाली एबिलिटी, तभी ये फायदे में रहोगे। The insolent clear. shall be punished. Nice and spicy. Come at me. Purging कहाँ गई? transgressions. Witness the power of Gugwa. Stand with me. Scanning. Breaking new ground. Winter shall be खेल खत्म, देखा बहुत बहुत पावरफुल है, बताया था ना मैंने, कहा था ना ये कैरेक्टर बहुत पावरफुल है। ओके ओके, आई विल हेल्प यू ब्रदर, डोंट वरी। मुझे भी हेल्प किया था बहुत लोगों ने, तब जाके यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ सकता क्या?
It's good to get out and stretch your legs once in a while. People aren't made to stay cooped up inside all the ट्रैवलर time. एयर वाला एंड काया 40 लेवल है. फिशल एंड बारबरा. ट्रैवलर को ना, ट्रैवलर की जगह ट्रैवलर को जगह कावे है तो कावे लगा लो. अच्छा है. कावे इज यूजफुल एक्चुअली. यू कैन यूज कावे इंस्टेड ऑफ ट्रैवलर. कावे यूज कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में मैं कहूँगा ट्रैवलर को यूज़ करो. ट्रैवलर को यूज़ करो और ट्रैवलर को डेंड्रो के साथ रेजोनेट करवाओ. डेंड्रो विद ट्रैवलर इज़ वेरी पावरफुल. डेंड्रो यहाँ पे होगा. ठीक, डेंड्रो इज़ हियर दिस एरिया. जहाँ पे सुमेरु होगा ना, सुमेरु वहाँ पे होगा डेंड्रो. ओके फाइनली. ओके, इनविटेशन, हमारा इनविटेशन. कावे और ट्रैवलर, बारबरा और फिशल. अब सही है. So, this is the kind of place where the big shots of Inazuma मैं live, बताऊं? huh? Paimon kinda expected कावे, it to be ट्रैवलर. snazzier. कावे, लेकिन ट्रैवलर के साथ कावे का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो मैच करे. कावे और क्या बोलते हैं, ट्रैवलर जो है ना, वो एलिमेंटरी रिएक्शन नहीं कर सकते. Welcome at last to the Kamisato residence, honored guests. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. कामिसाटो. Is this the Shirasage ओह कामिसाटो. behind the screen? आयाका. Yes. I think Ayako, As Ayata. the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within हाँ the वो Yashiro डेंड्रो है Commission. एक्चुअली. हाँ Forgive me. मेरे ये if this ट्रैवलर is भी an डेंड्रो है unwelcome एक्चुअली. surprise. ट्रैवलर भी डेंड्रो में देखो, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये. Makes sense. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this तुम्हारे fashion. ट्रैवल पे देखना ये ब्लू ब्लू होगा Especially जो चमक रहे हैं following यहाँ such a पे. long and wearisome journey मेरे over पे the ग्रीन है sea. क्योंकि मैं डेंड्रो के साथ I रेजोनेट have करके रखा awaited हूँ. your arrival with great anticipation. देखो And कावे Toma के साथ assures खेलना me है तो that you एक do वाटर वाला indeed एजेंट होना possess the चाहिए power to change the tide of the times. At present in Inazuma, जो अच्छा खेल ले in the वाटर name वाला. of the Vision Hunt वाटर Decree, प्लस कावे the इज people's बेस्ट. aspirations are being वाटर, senselessly trampled इलेक्ट्रो underfoot. एंड Though the डेंड्रो. Yashiro Commission serves ऐसा. the Shogun, it is the people with whom we share close bonds. Given the Ayaka, contact we are Kamisato. required to have with them in the performance of our duty, a commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Traveler, lend us your power, and we can... I'm just here to meet the Raiden Shogun. हाँ, Seemingly, I can't it's help. just like I said. This will take us nowhere. I'm going to Please, leave now. Wait! Please, don't go! क्या हुआ? I What? will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. You must fulfill 3 small wishes on my behalf. Okay. What are your wishes? They pertain to 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. Okay, visions ले लिया गया है. A warrior who guards a village. 3 लोगों से. A former samurai who helped carry out the Vision Hunt Decree. And a swordmaster determined to become the best in the world. कावे वाला फूल मेरा बहुत लकी फूल था एक्चुअली. Correct. जाके YouTube में वीडियो देखना, मेरे Please चैनल पे do होगा. all you can to बहुत help लकी था, them. बहुत लकी. I लकीस्ट will फूल था मेरा await your लाइफ return में. here. कावे मिला, Then फिर you कैंडीज have 2 my बार मिली. gratitude.
कीशिंग एक बार मिली, मतलब अलग ही I'm था sure वो। you'll do great. क्या करना है? जल्दी से खत्म करते हैं। ए फंसा, कैसे फंसा मैं? लॉल। ऊपर होगा पक्का। शिट 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 शिट। ओ नो। ओके, टेलीपोर्टर तो यहीं पे है, इजी। Let's see. Where's the person Ayaka told us about? Why are you doing this? Why leave all of a sudden, after all these years? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see. You must also be here to try and convince Tejima to stay. Tejima has protected this place ever since he arrived here 30 years ago. हाँ, कावे Keeping out मेरा the मेन treasure DPS है। hoarders, fending off any monsters that कावे draw इसमें near, मेन DPS, also resolving ट्रैवलर इसमें quarrels मेन between the DPS। बट आई villages. अब He मैं has ट्रैवलर put तो an यूज नहीं करता enormous एक्चुअली। amount of work into जैसे looking कावे after मिला this है, place. कावे And की we वजह से all ट्रैवलर को think छोड़ दिया the मैंने। world of him. But now, all of a sudden, he says he plans to leave us. We can't help but wonder, was it something we did? We will gladly apologize if that's the case. All we want is for him to stay. क्या हुआ भाई? What could be the... अरे जिससे बात कर रहा हूँ वो बात नहीं कर रहा मेरे से। If you want my opinion, something to do with the Vision Hunt decree. It's clear that Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, alone, circled the village a few times, and then out of the blue, he announced that he was going to leave and become a wanderer. Truth be told, Seems like he's a You must be Tejima. So what's made you want to up and leave? Me? It's not a question of why I want to leave, but a question of what reason I would have to stay. True, but that's not why I chose to stay, and what made me want to come here 30 years ago. And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions, because I can't remember anymore. Ever since they took my vision away, it's like a slice of my memory is gone. In the past, I knew I wanted to stay here. But whatever resolve I had then, it's gone now. So I thought, what's to stop me from moving around instead? The emptiness inside me will be there either way. Okay. Well, in that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay, you won't need to leave anymore. But if you can't remember anything, it's not gonna be... Oh! Maybe if you just try a little harder to remember, then it'll all come flooding back? Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, एक I बिल्ली do जैसा believe I कैरेक्टर saw है him वो। writing in a diary. आपके पास नाम I याद keep नहीं आ a रहा। diary? If you say so. I honestly हाँ हाँ, can't वो seem फालतू to लगा मेरे को, remember. यूज नहीं करता Oh, उसको। yes, yes, you do.
And what's more, I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things. Things which would prove very important at a later date. Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving, we just need to find his diary. It must be around here somewhere. Let's take a look. If you don't mind, we will leave you to find the diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. Okay. Find clues. This looks like Tejima's diary. Let's see what we today. The villagers and I got together to cook dry braised salted fish. I messed up and burned mine a little, so I had to pretend that it was black snakehead instead. Today, I helped rescue a kid who had fallen in the water. After I pulled him out, he told me that his best friend Bamboo was still in the water. I searched the water the whole afternoon before finding out that Bamboo was the name of his pet crab. I went kite flying today. The string broke, so I chased after it as fast as I could. I soon realized I was never going to get it back, so I just found somewhere to sit and watch as it flew away into the distance. Seems like your average diary of daily village life. Huh? Wait, I went to pray at the shrine. Now that's the kind of info we're looking for. Time to pay a visit to the shrine. कहाँ है ये श्राइन? ओ ये मंदिर. So this is the Omamori Tejima wrote about. Interesting. Looking at the color and the design, Paimon would have thought it belonged to a child. But anyway, if he had this with him all the time, there's a chance some of his elemental energy remained on it. Do you think that it might come in handy? Okay. Somewhere that Tejima visited a lot. The soil looks like it's been disturbed. Maybe Tejima buried something precious here. Must be something pretty amazing if it made him stick around. It looks like a letter. The paper's gone yellow. Konda Village. Sounds so familiar. If we become separate during war, go wait in Konda village. There will be a sale. So the reason Tejima, but he's been here for 30 years. Oh, guess they didn't. Well, let's go give Tejima his. Actually, वो इलेक्ट्रो वाला कहाँ है? Well, I'll be. भाई हर एलिमेंट का एक कैरेक्टर को अपग्रेड करना कैसा रहा? Letter belonged to me too. रिसोर्स की कमी तो नहीं पड़ जाएगी. But I have no नहीं, रिसोर्स की कमी नहीं पड़ेगी भाई. बहुत रिसोर्स है, बहुत. It's clear that I was waiting for. मैं तो अभी बोलूँगा तुम पहले ट्रैवलर को मेन कर लो और जैसे तुम्हें वाटर कैरेक्टर मिलेगा वाटर कैरेक्टर तब काव्य को मेन करना. तब तक के लिए ट्रैवलर एम्बर की जगह तुम्हें शिंगलिंग मिल जाएगी. तुम्हें डोंट वरी, कर लेना, शिंगलिंग मिल जाएगी. ट्रैवलर, शिंगलिंग, काया और कोई इलेक्ट्रो में कोई अच्छा, बस हो जाएगा काम. The time has flown by so quickly. 30 years feels like the blink of an eye.
How could I फिर have जैसे जैसे forgotten अच्छे से करेक्टर something मिलते so जाएंगे जो तुम्हें अच्छे important लगते हैं, स्पेशली जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, उनको ले लेना अपने पार्टी में, और क्या, अलग अलग एलिमेंट के. to me? Now that I think about it, when my vision was taken from me, it felt like I'd suddenly been hollowed out. Love, regret, everything I felt for her, it's all disappeared. No, after all, I've forgotten who she was. Her face, her voice, the things we experienced together. It's as if she'd never been in my life to begin with. As if all these years have been nothing but a hazy dream. I think maybe not. If this is something I waited most of my life for, I suppose I should carry on waiting. Although, what if she were to turn up eventually, only to find I didn't remember so much as her name? Wouldn't that, when I think about it like that, I do feel a slight tinge of sadness in my heart. How curious. Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? It's just like that feeling of emptiness, the feeling that something is... Thank you both for helping me reconnect with my reason for staying. I shall remain here and keep waiting. Tejima seems to be dealing okay, but still, it makes Paimon really sad. Seems it's just like Ayaka and Toma were saying. If you lose your vision, that certainly explains the state Tejima was in early. At least we were able to help him. Well, Next person. according to Miss Kamisato, the second... Okay, next person यहाँ है. Let's go. इसकी हेल्प करते हैं और आखिरी एक की हेल्प करेंगे कल की वीडियो में, ठीक है? आज के लिए इतने रखते हैं. They're the ones responsible for maintaining law and order in Inazuma. The ones actually enforcing the vision hunt decree. हाँ, ठीक है. बेस्ट. टिंग टिंग भाई ऐसे ही करो. Against one of their own. जब वाटर अच्छा मिलेगा ना कोई, Paimon doesn't get it. तब फिर आगे बढ़ना. There seems to be some commotion over there. Let's go see what's happening. Okay. I'll ask one more time. Do you intend to withhold this month's emergency provisions? The entire clan is counting on that food. We demand an How many times do I have to say it? I don't know anything about emergency provision. You dare deceive us? Those provisions are essential. Do you understand? You samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission will hear of this. Oh, huh? And who are you? What? We just happened to be passing by. We heard the commotion and came to see what the matter was. I see. You seem to have come just at the right time. Perhaps you can help us set... This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area, and he's the one responsible for distribution. In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now, he's keeping the provisions for himself. I just know it. We'll starve without them. No one seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind man, but he's shown his true colors. It's no wonder all the visions have been confiscated. The Raiden Shogun doesn't need people like him helping her rule the nation. This must be one of the people Ayaka asked us to help. But why would she ever want us to help someone? Maybe we should talk to Kurosawa. I've never even heard of these emergency provisions. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But either way, it's ridiculous. If I was hoarding supplies, would I still be the poor man I am today? My own family can barely get by as it is. Now, if you'll excuse me, I've got other matters to attend to. And that's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army told me that I was unworthy of my vision. And they said I was slacking off in my work. Apparently, I'd even disappointed the Raiden Shogun. And that's why they confiscated my vision. Well, that's strange.
You were helping enforce the vision. हाँ ओके भाई थैंक यू मैंने इतना सारा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे अभी स्टार्ट किया है To be ना मैंने perfectly रैंक honest, 20 हुआ I don't seem to remember the बारबरा भी details. मिली इसलिए पूछ All रहा I know is था that I would perform certain things. अरे कोई every दिक्कत नहीं है month, ब्रो जितने बार मन उतने बार पूछ लो I don't recall what they चिल were. पूछ And लिया करो टेंशन की it's बात not नहीं है just that. I have this और साथ ही शेयर कर देना ठीक unsettling है feeling शेयर कर देना और like बस सब्सक्राइब कर दो और कुछ नहीं चाहिए someone बस owes me सपोर्ट करते something. रहना ऐसे ही Does it और have to पूछते do रहो with जो the पूछना है missing ऐड कर लेना emergency मुझे ऐड करना हो तो साथ में खेलने I की कोई didn't दिक्कत नहीं take any. Like I said, if I was taking them for myself, I wouldn't be going through such hard times right now. To top it all off, my house was just raided by treasure hoarders, which is why I came here in the first place. I was chasing after them when I got held up by these two. If you don't believe me, go find the treasure hoarders yourself. If there were any emergency provisions to be had, He's sick, but we better confirm. We should be able to find. ओके यहाँ पे We really outdid ourselves this time. All those samurai houses packed with goods. We really hit the You haven't seen anything. Today's just the... You demand! These seem like the treasure hoarders we're ओह after. मैं लैपी में खेलता हूँ लैपी में Come at me! Nice and spicy. No, my sword. Our bond is strong. Sight clear! Come at me! हो गया इजी Oh, there goes all the Mora. We worked hard to steal that, you know? Come on, boss. Think of something. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Kurosa. So he's the one who sent you after us. So what did you? Food supply. I didn't want anyone else to... But now that you've caught us, how about we... चल खाना वापस कर Deal. Huh? What the... There's nothing in here but... Yeah. A lot of them and they all seem to be made out to the owner of a general good. We better talk to. As for you guys, Yes, of course. So, we redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Shut it. सो हो गया FPS मैटर करता है इस गेम में मैं 30 FPS पे खेलता हूँ हाँ 30 मैं फ़ोन पे भी एक बार खेला था तो 30 FPS पे खेला था फ़ोन पे सही है हो जाता है काम चल जाएगा चलने के लिए ज़्यादा FPS नहीं चाहिए फाइटिंग के टाइम ही चाहिए होता है क्योंकि स्टोरी गेम स्टोरी बहुत सारा है फाइट भी है स्टोरी भी है There's something you want to inquire about? Ah, so you're friends of Kurosawa, I take it? whoa! How did Kurosawa end up owing you so much money? Did he buy anything super? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs. He'd always put the payment on his own account. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. So, he started writing out IOUs to cover whatever he couldn't afford. So that's how you. But why did he have to purchase a usual amount? If the prices increased, couldn't he just buy less? Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating how much they needed to sustain them each time. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough. So he deemed it necessary to take on the debt rather than let the Wow. Kurosawa was purchasing and no one ever. people's attitudes. If you ask me, of course, I'm sure there would still have. As for Okay. why he chose, if you're still curious, why don't you go ask him? I see. That reminds me, it seems that his vision most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his 4GB name, laptop he'll have में no चल choice but to जाएगा sell that Genshin sword that is so dear to him. Sword? हाँ 4GB पे Oh. पता नहीं ब्रो 4GB पे चलेगा कि नहीं चलेगा स्लो प्रोसेसर स्लो होगा तो शायद ना चले I
बट तो फोन पे अगर खेलते तो फोन पे भी चल जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। that it was a gift from his father, that it was too लैपी precious to चाहो तो मॉडिफाई करा sell. लो, In अपग्रेड होता है, hindsight, लैपी I करवाना है तो करवा regret सकते that I never हो। made an एसएसडी और offer रैम लगवा on लेना it. अच्छी तो शायद चल जाए। Everything has its price, at least that's what I think. Why don't you ask him about the sword yourself? Perhaps it'll even provide you with the answers you're looking for. Oh, but before you go, if you would But we didn't buy it. Information is also a kind of... Don't worry. भाई I पैसे लूट don't रही charge है। much for information about At least we now know where the emergency. Let's go ओके talk to ले ले पैसे भाई, चोर है भाई, पैसे उठा लिए मेरे, गंदी बात। ट्राई करने को कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा लोड आया तो फिर छोड़ देना, गेम मत खेलना फिर। लैपटॉप पे जहाँ पे खेलते हो उसी पे खेलना, फ़ोन पे खेलते हो तो फ़ोन पे ही खेलना फिर। What are you doing here all by yourself? I presented them with a choice. Either they left or I drew my sword. They left. It turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I should start using it more. Did you manage to track down the treasure hoarders? That just about sums it up. It turns out that you really were distributing emergency provisions. Strange. Is that really the kind of person I was? I don't really have any such recollection. लैपटॉप कुछ नहीं होगा, लैपटॉप बंद हो सकता है और I कुछ नहीं still होगा। don't remember why was I purchasing लोड आएगा emergency तो। provisions for everyone, and why would I put myself in such a difficult situation? I really don't understand. But I cannot deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow reluctant to do so. लॉल। मैं अपने This sword. मेरे मतलब कि पुराने वाले पीसी में मैं बहुत सारे हैवी लोड डाला करता था, कभी नहीं फटा आज तक। तो खराब जरूर हो गया लेकिन फटा नहीं। To the kids next door. What did he say? I can't seem to remember. It would seem that I forgot many important things when my vision was taken from me. So many memories gone. All I can remember now is my father विजन telling जाता है me तो मेमोरी भी भूल that जाता this है बंदे। blade bore his life's creed. ओके Before he passed जल्दी से away, खत्म करते हैं ये भाई, he placed खत्म the नहीं हो sword रहा। in my hands and said to me, "With this sword, सही है सही है, पैसा आएगा आईपैड ले लेना भाई, मस्त चलेगा फिर तो मक्खन। If you look carefully, there सही है ब्रो। seems to be some words engraved on the hilt. Can you recognize the words? virtue." Somehow those two words seem to explain every taking on sin. But what use are virtue and justice? Virtue and justice. I purchased the provisions for those in need. The Tenryo Commission seized my vision, and the very people I was so desperately trying to help refused to understand me. And the irony of all of it is, I'm incapable of being a good person. Yet I'm equal to unable to be bad. I don't know what to do. Yet another troubled soul. When we get the chance, let's speak to Toma about Kur's. In any case, we must Okay. never let him sell off that sword. Yeah. Seems like losing all it. Fortunately for us, you don't have of it. Let's go विजन find नहीं है, another. विजन नहीं है तो हम कुछ नहीं भूलेंगे। ओके एक आखिरी बंदा है जो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है, जो कि इस जगह पे है, यहीं पे है। सो कल करेंगे कंटिन्यू इसको, आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आप लोगों को। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय।